वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे वी आर लुकिंग एट निफ्टी बीइंग वेल अबव 18,000 18,055 पे क्लोज किया है। एंड दिस इज आफ्टर सम हेजिटेशन एंड डाउट्स कि बहुत लोगों को लगा था कि क्या होने वाला है, विल इट एक्चुअली सस्टेन। एंड टर्न्स आउट उसने 18,000 ब्रेक करने के बाद इट एक्चुअली केम बैक अबव द लेवल, विच इज अ गुड साइन। तो हम लोग देखेंगे चार्ट्स को थोड़े समय में। Till that time, let's take a look at the broad market indices. We can see कि आज Nifty is actually relatively better compared to many of the other indices. We can see mids and smalls जो है वो उसने उतना अच्छा नहीं किया है. Nifty is up 0.3, the rest are all flat 0.1, 0.2 के आसपास. We can see that VIX is also flat. In fact, negative नहीं है, positive नहीं है. सो दैट्स समथिंग टू कंसिडर। अगर हम लोग बात करें बैंक्स की, बैंक्स आर एक्चुअली वेरी फ्लैट, आई वुड से सिर्फ 100 पॉइंट्स अप है। बट हम लोग जब चार्ट देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट द मूवमेंट्स वर इन बैंक्स, स्पेशली व्हेन वी लुक एट द इंट्राडे चार्ट्स। वी कैन सी हियर कि मेटल्स आज डाउन थे। इनफैक्ट अगर हम लोग देखते हैं टॉप लूजर्स में, we can see that the top two stocks are metals. We also have Hindalco here on this list, which is obviously also in the similar sector. अगर हम लोग गेनर्स की बात करें, वी कैन सी HCL Tech here is on the list, 4.5% up. अगर आपको याद है, HCL Tech was actually one of the losers even when Infosys and TCS did fairly well. So वो एक चीज है. Another very key top performer is HDFC. 2700 के ऊपर है वो, which is a good sign. TCS above 3900. एक चीज ध्यान में रखनी है, TCS and Infosys both I believe have their results tomorrow, at least based on what trading view indicated. So देखते हैं वो कैसा जाता है. And these are the stocks that pulled and dragged Nifty. So हम लोग देख सकते हैं HDFC had the biggest contribution, followed by Reliance. And on the downside we can see Bajaj Finance, JSW Steel and Tata Steel. So वो चीज है, again main जो contributors थे वो ये. And then we had these. So let's see how it goes. अगर अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, वी कैन सी हियर दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। हम लोग ने जो ड्राइंग्स की बात की थी वो ऐसे दिखते हैं। एंड अगेन 140 का जो लेवल है, मे बी दैट इज वेयर निफ्टी माइट बी हेडेड, एंड मे बी दैट इज वेयर इट माइट जस्ट फाइंड सम रेजिस्टेंस। अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट देखें, देन वी कैन सी दैट इट डिड फेस सम रेजिस्टेंस एट स्टार्ट। हम लोग देख सकते हैं कि 18,000 के ऊपर वो रह नहीं पाया था, एंड दैट इज व्हेन इट एक्चुअली रीटेस्टेड द लेवल। देन इट फाइनली ब्रोक इट, थोड़ा सा ऊपर नीचे वॉलेटाइल चॉपी मूव्स दिए। उसके बाद 230 के आसपास बहुत नीचे आया, रीटेस्टेड प्रीवियस क्लोज एंड देन इट वेंट अप। सो ओवरऑल यू आर हैज दैट सेइंग कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, विच मीन्स गया किधर भी नहीं, बट इट एक्चुअली मेड ऑल द डैमेज ऑन बोथ साइड। सो इट इज सिमिलर टू दैट, आई वुड से। एंड अगेन डेली अगर देखे, बाकी सारे चार्ट भी देखे, इट डज नॉट लुक बैड, इट डज नॉट लुक वीक एट ऑल, बट इट जस्ट शोज कि इतना ऊपर जाने के बाद मे बी इट्स जस्ट फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ ब्रीदर और हेजिटेशन, या जो भी बोलना है। ऑब्वियसली स्पेशली क्योंकि अभी सारे इवेंट्स और सब जो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के, वो भी आने वाले हैं। इन अदर न्यूज, यू माइट हैव सीन दैट द इंडियन गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ वोडाफोन आइडिया। आई बिलीव अभी टाटा टेलीकॉम में भी सम सिमिलर न्यूज हैज कम where the government will have 9.5% stake. So लेट्स सी हाउ दोज थिंग्स अफेक्ट। ऑब्वियसली शायद निफ्टी बैंक निफ्टी को ना करे, बैंक निफ्टी को तो डेफिनेटली नहीं करेगा, बट मे बी निफ्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट। बट डेफिनेटली इफ समवन हैज दो स्टॉक्स इन देयर पोर्टफोलियो, तो शायद वो एक चीज हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अप बैंक निफ्टी, वी कैन सी कि बैंक निफ्टी काफी नीचे आया था, एंड आफ्टर दैट इट्स कम अप। नाउ दिस इज ऑनेस्टली अ लिटिल बेटर देन व्हाट वी सॉ विद निफ्टी, रीजन बीइंग कि बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल्स अटेम्प्ट किए थे और उसके बाद अच्छे से ऊपर गया है, एंड इट इज क्लोज्ड अराउंड द हाई। Whereas if we see Nifty, it attempted the lower levels just a little bit and then it was relatively flat. So I mean, even though overall उतना difference नहीं है, दोनों उतने ज़्यादा positive नहीं है, I still feel that Bank Nifty at least to me looks better because again it's come down. यहाँ पे जाके it's actually gone up, which is I think again is a good sign because ये वाला जो zone है, it reaffirms that there is good buying pressure here. So again इसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं, 39,000 we can see is the level according to Fibs, and we have seen that acting as a resistance before also. नेक्स्ट आप अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस हम लोग देख सकते हैं हायर लेवल से रिजेक्शन हुआ है उसका। अगेन सेम थिंग दैट वी बीन सीइंग दिस पास्ट कपल ऑफ वीक्स आल्सो, कि वो 2450 के ऊपर रहने में उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। दिस इज द 5 मिनट, वी कैन सी
सेम थिंग राइट, वेंट अप, वो हायर लेवल से रिजेक्ट किया और फिर वहां पे ही बस रुक गया साथ. सो अगेन नॉट मच टू टॉक अबाउट हियर बिकॉज इट्स द सेम थिंग, बट ऑब्वियसली देयर इज अ चांस. अभी हायर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया है, बट दैट सेड लोअर लेवल्स के आसपास भी आया नहीं है, सो इट्स डेफिनेटली नॉट नेगेटिव बाय एनी एनी चांस. इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो दिस इज वन ऑफ द हायर क्लोजेस दैट वीव सीन इन द recent times. We can see it's actually making good progress. So Reliance again has a good chance as well. HDFC बैंक की बात करें, very similar to Bank Nifty's candle, नीचे आके वो ऊपर गया है. Again, I like to see that. We can see that it is almost at the previous higher close that we saw recently, ये वाला. सो अगर अब वो 1580 के आसपास जा सकता है, देन आई फील इट्स वेरी क्लोज टू जस्ट हिटिंग 1600 एज वेल, जहाँ पे मेन रेजिस्टेंस है. आई थिंक 1600 के आसपास रियल देखना पड़ेगा. उसके नीचे जो भी होता है, आई थिंक दैट्स जस्ट minor up and down movement that we might see again on a broader scale. अगर आप लोग इंट्राडे के हिसाब से देखते हो, इंट्राडे के हिसाब से obviously the distance between here and 1600 is massive. It's around what 2.5% or so. So clearly वो time frame पे नहीं जचेगा. But if you're talking about broader time frames, then सीधी बात है, we are below 1600. I think that is the level to really look out for, especially क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं consistently higher lows दे रहा है, and it is approaching that 1560 1580 level itself. So वो देख पाएंगे. नेक्स्ट अप we've got Infosys रीजनेबली वेल किया था, बट देन इट्स कम बैक डाउन. एंड अगेन ऐसी सारी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिवन कि ये वाले कैंडल्स इतने इतने डाउन थे, मतलब इतने बड़े रेड कैंडल्स थे. सो जनरली दीज थिंग्स डू हैपन, वी डू फेस रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स, स्पेशली अगर हम देखते हैं कि कल का जो हाई था वहां से ही वो नीचे आया है. सो अगेन नथिंग टू आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हियर आई वुड से, बट लेट्स जस्ट सी कैसा होता है. अगेन लेट मी रिमाइंड यू, टुमारो इज द रिजल्ट्स फॉर इन्फोसिस. सो रिजल्ट्स के पहले हमेशा ऐसा होता है, एंड रिजल्ट्स के ड्यूरिंग ऑब्वियसली देयर विल बी समथिंग. एंड मेनी टाइम्स आई बिलीव लास्ट लास्ट ईयर क्या हुआ था कि रिजल्ट के दिन उतना कुछ उसने खास नहीं किया था, बट रिजल्ट के बाद वंस द इवेंट वाज एक्चुअली ओवर, दैट इज व्हेन द रियल मूवमेंट स्टार्टेड हैपनिंग. सो अगेन cautious रहना better है, as we've spoken about all of this last week also. HDFC की बात करें, दिस इज वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स हियर. हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे जैसे किया था इन अगस्त, इट डिड द सेम थिंग. इट वेंट अप 2680 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, 2600 से सपोर्ट लिया, एंड देन इट जस्ट ब्रोक आउट. वी आर सीइंग समथिंग सिमिलर हैपनिंग अगेन. अगर ये सेम चीज होती है, then there's a good chance we see it somewhere around here 2770 के आसपास again in the next coming few sessions. So देखते हैं वो कैसा जाता है. According to trading view, HDFC के results Feb में है, so quite some time to go for that. ICICI बैंक की बात करें, it is above that level for the second time, 810 पर है, which is again a good sign. And we've spoken about this level right here. वो लेवल के ऊपर कल उसने क्लोज किया था, आज नीचे आया और उसके बाद वो ऊपर गया है. आई थिंक दैट इज अ गुड साइन. इट सेज समथिंग गुड. वी कैन सी इट केम डाउन एंड देन इट एक्चुअली टुक सपोर्ट फ्रॉम हियर, व्हिच इज अ गुड साइन. सो देखते हैं हाउ इट गोज. ऑब्वियसली ईओडी अगर देखें तो इट्स वेरी फ्लैट, almost 0.00%. But let's see. नेक्स्ट अप वीव गॉट कोटक बैंक. कोटक बैंक उतना अच्छा नहीं कर पाया जितने बाकी काफ़ी सारे बैंक्स कर पाए थे, बट देन अगेन इट्स हैड अ वेरी गुड रन अप अंटिल हियर. अगर हम लोग देखते हैं लोज से, देन वी कैन सी इट्स अराउंड 13% yesterday एंड अराउंड 12% टुडे, विच इज़ अ गुड नंबर. देखते हैं क्या होता है. अगेन दिस इज अ फिब रेजिस्टेंस, सो लेट्स सी हाउ इट गोज. इफ इट्स एक्चुअली एबल टू क्लोज अबव 1960 और सो, ऑब्वियसली दैट विल बी अ गुड साइन. SBI की बात करते हैं, इट्स क्लोज्ड हायर. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स टुडे, अप 0.5%, विच इज गुड. हम लोग देख सकते हैं 505 पे है. दिस इज ऑब्वियसली द सेकंड डे दैट इट्स क्लोज्ड अबव 500 इन अ रो, विच इज अ गुड साइन. देखते हैं कैसा जाता है. अगर आपको इंट्राडे मूवमेंट्स देखनी है, अगेन इट्स वेरी सिमिलर फॉर मेनी ऑफ दीज बैंक्स, बट आपको जस्ट दिखा रहा हूँ. Next up, we've got Axis Bank. Axis Bank, in typical Axis Bank characteristic, एकदम flat हुआ है आज. Flat as an indecisive. We can see it's a doji spinning top here. So that's what we're seeing. अगर हम लोग 5 minute chart देखते हैं, now this is the real problem area for Axis Bank today, I believe, क्योंकि बाकी सारे banks में लगभग यहाँ तक आया था और उसके बाद steadily here or so it closed. But Axis Bank में after 2:30 p.m.
वी सॉ अ लॉट ऑफ सेलिंग, और वो सेलिंग वो रिकवर नहीं कर पाया था, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग इट डाउन. सो वो एक चीज है. नाउ अहेड ऑफ इट रिजल्ट्स, लेट्स जस्ट सी टीसीएस एज वेल. टीसीएस आप देख सकते हो, अगेन एज पर ट्रेडिंग व्यू 12th जैन का उसका रिजल्ट बता रहा है. नाउ आई जस्ट डिड अ क्विक फिब एक्सटेंशन. बाय द वे, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ टू डू फिब एक्सटेंशंस, आप देख सकते हो all of my recent videos. If you see this one, all of my recent videos, you will have these watch next links. ये watch next links जो है ना, इसमें आई बिलीव ये वाला जो पहला लिंक है दैट इज ऑन फिब एक्सटेंशंस, तो वो जरूर आप देखना, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस हिसाब से यहाँ पे टीसीएस पर फिब एक्सटेंशन डाला है. अगेन while you're at it, you might as well subscribe, it helps out a bunch. So हाँ, that's what we're seeing. Again, as per TCS's chart, we can see आज काफी रिकवर कर पाया था. But then again, we are always going to see erratic moves ahead of these events. We can see the intraday gained massively here. So this might signal something related to the result. देखते हैं कैसा जाता है. Very curious to hear your thoughts as well. Let me know what you feel. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.